Hello, this is Ayush, and let's start with the topic for the day. We will be talking about the topic as displayed on the screen, that is percentage. So, starting with the topic percentage, basically, when we are talking in terms of percentage, we need to understand certain things. Generally, the perception is that percentage it's one of the easiest topics we can have in quant. Secondly, this is a base topic. Generally, percentage is laying the base for you when I'm talking in terms of topics like profit loss, topics like simple interest, compound interest. They're completely based on the applications of percentage. And in case if someone is understanding percentage in a proper manner, there's a very high probability that you don't need to mug up the formulas when I'm talking in terms of topics like profit loss and simple interest compound interest. बिकॉज ये जो है ये प्रॉपरली परसेंटेज का एप्लीकेशन ही है अगर आपने परसेंटेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन आपके हाथ में आ जाता है. थर्डली दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली रिलेटेबल लाइक वन ऑफ द टॉपिक जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं. फोर्थली इट लेज द फाउंडेशन ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स. इट इज समथिंग हाउ टू कैलकुलेट मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस कि अपन परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको. So starting with it, एक basic सा example like suppose generally what happens is कि percentage की जब अपन बात करते हैं तो we are talking in terms of एग्जाम्स जो अपन स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे देते रहते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Suppose you are appearing for an exam and the maximum marks of the exam were 800 and let's take you secured 560 out of it. 560 मार्क्स आपने सिक्योर की. 800 मार्क्स का पेपर था और आपको अब कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ. So in this case, what happens is कि generally आप में से सबको पता होता है कि it is 560 upon 800 into 100. Now, just think about it. ये तो आपको पता है. मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. You can pause the video for a second. You can think about the question that I'm going to ask you and can reply to yourself and then think about it कि आप अपने आंसर से satisfied हैं या नहीं है. The question is, what is percentage? What do you mean by percentage? Percentage का मतलब क्या होता है? Just take a halt, pause the video, think about it कि आपको percentage का genuine meaning पता है या नहीं पता, and then get a conclusion कि are you satisfied with your answer? जो आंसर आपने दिया आप खुद उससे satisfied है या नहीं है. Going ahead. Look, I feel like कि आपने शायद वीडियो पॉज किया होगा, आपने एक बार खुद ने परसेंटेज का मीनिंग सोचा होगा एंड हो सकता है आपने जो आंसर निकाला वो सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो. प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इज विद दोस्त जिनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला. द प्रॉब्लम इज जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं परसेंटेज जैसे बेसिक चीज की बात कर रहा हूँ जो आप बचपन से यूज कर रहे हैं, जो आपको कैलकुलेट करना आता है, जो आप डेली यूज कर लेते हैं, जिसका एक्स वाई जेड आपको सब पता है, आपको उसका जस्ट मीनिंग नहीं पता है. The basic logic that, according to me, lies behind the rationale is आपको चीजें समझी भी नहीं है, रटी हुई है. यू हैव मक्ड अप द थिंग्स एंड बिकॉज दैट वाज द टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट वाज बीइंग अडॉप्टेड, आपको चीजें समझाई नहीं गई है. ठीक है. परसेंटेज एक बहुत बेसिक सी चीज है जिसको आपको मतलब पता होना चाहिए था. लेट्स टॉक अबाउट इट. विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक विद अ वेरी बेसिक मेथड दैट इज यूनिटरी मेथड. नाउ द थिंग इज आपको यूनिटरी मेथड आता है या नहीं आता. जनरली द आंसर इज यस आता है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स से नहीं सर नहीं आता. बट मेजोरिटी लाइक सर मेरे को आता है बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो यूनिटरी मेथड क्या होता है. वैसे मुझे आता है. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एनी ऑफ द कैटेगरी द आंसर इज यूनिटरी मेथड. आप सबको आता है. We just need to understand कि unitary method क्या होता है. I'll just give you a basic example about it. And trust me for this, you'll be easily able to recall कि unitary method actually होता क्या है. So the example lies over here. You went to the market, आपको पेन परचेज करना था. आप गए मार्केट में, आपने 5 पेन एक साथ परचेज कर लिए फॉर अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज. What is the cost of one pen? Now the answer is 20. ये सबको पता है. करते क्या है, 100 divided by 5 कर दो, you'll get the value as 20. Perfect. If the cost of one pen is rupees 20, can you get me the cost of 7 such pens? Now again the answer is very simple, it's 140. अगर एक पेन 20 रुपीज का है तो 7 पेन होंगे 20 into 7, that is 140. Perfect. यहां तक सबको होपफुली आता था एंड एक्चुअली दिस इज यूनिटरी मेथड. अब बताइए आता है या नहीं आता. आई गेस द आंसर इज यस आता है. इसको थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में मैं समझा देता हूँ. लाइक व्हाट इज हैपनिंग इज आप जब मल्टीपल से वन पे आ रहे हैं, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 5 to 1, यू नीड टू डिवाइड.
जब आप 1 से मल्टीपल पे जा रहे हैं, यू नीड टू मल्टीप्लाई। बराबर, ये सबको पता है। सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्सेप्ट। मैं इसको एक बार लिख लेता हूं। अगर आप मल्टीपल से 1 पे आ रहे हैं तो ये डिवाइड, 1 से मल्टीपल पे जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई, राइट? ये समझ में आया। नाउ माय बिग क्वेश्चन इज, I am not saying 5 to 1 or 1 to 7. What I'm saying is multiple to 1 and 1 to multiple. मैं 5 को मल्टीपल बोल रहा हूँ, मैं 7 को मल्टीपल बोल रहा हूँ, मैं 1 को 1 ही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग 5 टू 1। मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल टू 1 एंड 1 टू मल्टीपल। तो 1 को तो मैं 1 बोल रहा हूँ, 5 7 को मल्टीपल क्यों बोल रहा हूँ? एनी लॉजिक्स अकॉर्डिंग टू यू? अगेन, आई होप यू मस्ट हैव गिवन इट अ थॉट। The actual reason मेरे हिसाब से, there are certain reasons for that. ये 5 का मल्टीपल, 5 is a multiple of 1, 7 is a multiple, ये सारे लॉजिक सही हैं। What according to me is the correct answer is, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 5 का ही कॉस्ट दे दो। You might be provided with the cost of 6, 7, 8 or any other number. मतलब बेसिकली this 5 is a variable quantity. कितने भी वैल्यूज का वैल्यू पता हो, कितनी भी क्वांटिटी का वैल्यू पता हो, बी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1। तो जैसे 5 का वैल्यू पता था, मैंने 1 का निकाला। सो 1 इज फिक्स्ड ओवर हियर। कितने का भी पता हो, हमेशा 1 का ही निकालूंगा। 1 का निकालने के बाद आई कैन कैलकुलेट इट फॉर 7 ओनली और फॉर एनी अदर नंबर। द आंसर इज एनी अदर नंबर। आप 7 की जगह किसी भी वैल्यू का आंसर निकाल सकते थे। सो दिस 5 में वेरी, दिस 7 में वेरी, बट दिस 1 इज फिक्स्ड ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस मेथड एज यूनिटरी मेथड। द रीजन इज यूनिट यूनिटरी मेथड। इसमें मैंने हाईलाइट किया द वर्ड यूनिट। यूनिट मींस 1। Now, since this method is entirely based on the calculation of 1, सब कुछ 1 की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। कितना भी बताओ 1 निकालो, 1 से कुछ भी निकाल सकते हैं। That's why we are calling this method as unitary method. ये लॉजिक क्लियर हुआ कि यूनिटरी मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते क्यों हैं? Because the word unit means 1 and the dependency for this method is entirely on the value of 1. That's why we are calling this method as unitary method. I hope that's clear to you. Just a random question in between, which is not related to anything, but just for the sense of understanding. अगर ये डिपेंडेंसी लेट्स अज्यूम 1 की जगह 2 पे होती, तो मैं इस मेथड को क्या बोल रहा होता? गिव इट अ थॉट। I think the name would have been binary method, because bi means 2. So I would have used a word like binary method because bi means 2. Okay, it is just a random question which is not related, and trust me, there doesn't exist anything like binary method. I'm just giving you an example to make the things clear and understandable. ऐसा हो क्यों रहा है, वो लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी होता है। So I hope that's clear कि why we are calling this method as unitary method. Any random guess why we are talking in terms of unitary method before talking about the topic percentage? परसेंटेज की बात करने से पहले यूनिटरी मेथड की बात क्यों कर रहे हैं? Because the concept of percentage is actually based on the method which is unitary method. तो अपने को ये समझना जरूरी है कि यूनिटरी मेथड पे कैसे बेस्ड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. Like, suppose you are appearing for an exam, because generally we are talking in terms of exams only when we are talking about percentage. You are appearing for an exam, and the maximum marks of exam were 500, and you scored 450 out of it. How much you'll be scoring out of 1? Now, this is a random question. This is a difficult question at times, ambiguous question है, थोड़ा सा complicated हो जाता है, but इसको थोड़ा सा मैं वापस से लेके चलता हूँ। देखिए, जब आपको 5 का वैल्यू पता था और आपसे 1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, you simply divided it by 5. This time you are aware of the value of 500, you are being asked upon to calculate the value of 1. Can I say I'll divide it by 500? So 1 में से 450 upon 500 है। 100 में से कितना है? 1 का वैल्यू पता है, multiplied by 100, I'll get the answer 450 upon 500 into 100, which is 90%. Surprisingly, this is the same way as you told me how to calculate percentage, that is marks obtained upon total into 100. This entire concept of percentage calculation is actually based on unitary method. Is this clear now? Let's take another example for this. Get me the answer, values by yourself only. 200 में से 140, जल्दी से बताइए। 1 में से कितना? It's 140 upon 200. 100 में से कितना? It's 140 upon 200 into 100, which is 70%. एक और एग्जांपल, 50 में से 40, जल्दी से बताइए। 1 में से
Yes, it's 40 by 50, 100 में से 40 by 50 into 100, which is 80%. So I hope ये तीनों examples आपको clear होंगे. Now, the question is what we were trying to calculate in the three examples above? It is percentage. We are trying to calculate percentage in the three examples that we just discussed. Now, my big question is, while calculating percentage in the three examples above, did you find anything in common? तीनों examples में आपको कुछ भी common दिख रहा है? Randomly students are replying unitary method common है, 1 का value है 500 है 200. मेरे हिसाब से the common part is 100. ठीक है? Irrespective of your total marks being 500, your total marks being 200, your total marks being 50, your total marks being greater than 100, your total marks being less than 100, you always calculate the percentage out of 100. That is what we need to understand. Look, just recall many of the things in the past. आप स्कूल में थे, आपका 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था, तो भी परसेंटेज 100 में से ही आता था. आप 200 मार्क्स का टर्म टेस्ट देके आते थे, तो भी परसेंटेज 100 में से ही आता था. ईयर का टोटल होता था लाइक अराउंड 2000, फिर भी परसेंटेज को 100 में से ही रिजल्ट दिया जाता था. Even if I'm talking in terms of percentage population of males in India, like I'm saying 70% of the population of India are males. इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ के अप्रॉक्स है, उसमें से 70% 100 करोड़ से ज्यादा होता है, बट फिर भी मैं परसेंटेज को 100 में से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मतलब इट वोंट मेक अ डिफरेंस कितना छोटा या कितना बड़ा वैल्यू है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. द थिंग दैट मैटर्स इज कि परसेंटेज को 100 में से कैलकुलेट किया जाता है. थिंक अबाउट इट. बीच में अपना क्यूमुलेटिव मार्किंग होता है, सीजीपीए आता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स में. तो सीजीपीए का ऐसा फिक्स है क्या कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इट आउट ऑफ 10 ओनली? नो. At times it's out of 4, at times it's out of 10, out of 20, out of 50, can be out of any value. But percentage का फिक्स है, it is always calculated out of 100 only. So जब percentage को define करने की बात की जाती है, I'll simply give you a way to define percentage. Percentage मेरे हिसाब से बहुत simple सा है एक definition कि what it is a way of expressing any quantity with respect to 100. किसी भी क्वांटिटी को 100 के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने के तरीके को परसेंटेज बोला जाता है. लेट मी ट्राई टू इलैबोरेट इट a bit more. Percentage is a way of expressing any quantity. समझ में आता है? What do you mean by the term with respect to? With respect to का मतलब क्या होता है? Okay, so generally the answers are with respect to means with reference to something, in comparison to something, in relation to something, on the basis of something. So for example, like if I'll say you have twice the money as I do have. You have twice the money as I do have. I'm having 40 rupees. You'll have 80. I'm having 70 rupees. You'll have 140. I'm having 52. You'll have 104. So what you are doing, you're basically calculating your money with respect to mine. So dependency, it's entirely on my value. As soon as my money changes, your value changes. Right? When we're talking in terms of percentage, we are calculating it with respect to 100. So dependency, it's entirely on 100. Now, what do you mean by the term dependency is on 100? We need to take an example for that. So let me just give you an example for this. Like, let's assume you're having a water bottle with you and the water bottle is half filled. What do you say? How much percent is it filled? It's a very common answer. It's 50% filled. अगर कोई water bottle आधा भरा हुआ है, you'll say it's 50% filled and that's the correct answer. Now we need to understand इसका मतलब क्या है. Suppose ये बॉटल आपका 10 लीटर का था, तो कितना लीटर भरा हुआ है अभी? 5 लीटर. 12 का था तो 6. 28 का था तो 14. 52 का था तो 26. 100 का था तो 50. That's why it is 50% filled because with respect to 100 50 भरा हुआ है. आपने मुझसे पूछा कितने लीटर का बॉटल था? No, it didn't ask me for it. Was that required? Now the students are confused. Yes, it was required. No, sir, it wasn't required. Just to get out of the dilemma, let's try to understand. अभी मैंने बताया, total quantity doesn't matter. What matters is कि out of 100 कितना है. जैसे ही मैंने बोला
बॉटल आधा भरा हुआ है, आपने बोला यार 100 का आधा होता है 50, मतलब 100 में से ये 50 भरा हुआ है, मतलब ये 50% फिल्ड है। मैं बोलता हूँ 1/4 भरा हुआ है, आप बोलोगे 100 का 1/4 होता है 25, मतलब ये 100 में से 25 भरा हुआ है, ये 25% फिल्ड है। दैट्स इट। सो एज सिंपल एज दैट, 100 में से कितना है, दैट इज ऑल अबाउट परसेंटेज, राइट? अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज समडे इफ आई फील लाइक चेंजिंग द रूल एंड आई मेक इट परसेंटेज को डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू 10। So now the question is, the bottle is half filled. How much percent is it filled with respect to 10? It's 5% filled. And that's the correct answer. But basically, it's a rule. Percentage is always to be defined with respect to it only. So we cannot change the rule. ठीक है, ये समझ में आ गया? Let me take another example for this. 200 का हाफ कितना होता है? 100. And 140 का हाफ कितना होता है? 70. That's why this is 70%. Because if it is 200 में से 140, आप दोनों का हाफ करते हैं तो 100 में से 70 आ जाएगा, 70% हो गया। 50 का डबल कितना होता है? 100. 40 का डबल 80. That's why this is 80%, because if it is 40 out of 50, it will be 80 out of 100. Is that clear? समझ में आ रहा है परसेंटेज होता क्या है? बेसिकली overview about percentage, it is just a calculation out of 100. 100 में से कितना है, that is all about percentage. I hope that's clear. We can go ahead, can take a screenshot, or can go ahead with the things. You might have taken a note as well. You can pause the video, can take a note, going ahead with it. There are certain basic words that we need to understand before going ahead. The first word is per. Per means one. And we just checked it out. To calculate the value of 1, we need to divide. Unitary method में भी अपन ने देखा था. The second word is cent. Now, this is a big confusion. Cent का मतलब क्या होता है? देखो, many of you are already aware of the word cent और इसका मतलब बहुतों को पता है, कईयों को नहीं पता है. So for those students, we need to understand and we need to make it clear. ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं सेंट का मतलब क्या होता है. देखो, इंडिया में एक बहुत कॉमन सी चीज है, क्रिकेट. आई होप क्रिकेट का आइडिया आप सबको होता है. So when we are talking in terms of cricket, one of the favorite cricketers is being asked upon. Generally, the answer is Virat Kohli. So let's take an example. Virat Kohli is playing cricket for India, and आज विराट कोहली ने ऐसा कुछ बनाया, सेंचुरी. अगर विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए. तो सेंचुरी मींस 100 रन इन क्रिकेट. व्हाट इज कॉल अ पीरियड ऑफ 100 years. 100 years को क्या बोला जाता है? इट्स अगेन ए सेंचुरी. 10 years को क्या बोला जाता है? इट्स अ डेकेड. So century, we need to understand century. It's a word which is always defining a quantity of 100. Century का root word है cent. So basically, cent means 100. Abhi, getting back to the basics, we need to understand. Percentage is always defined with respect to 100. ऐसा rule क्यों बना? मैथ्स में लॉजिक्स हैं, आपको लॉजिक समझना जरूरी है. Why do we have a rule कि 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, 20 के रिस्पेक्ट में क्यों डिफाइन नहीं कर देते हैं? Because it's a word percentage, and percent ka cent means 100. The name itself contains the word 100. You have to define it with respect to 100. You cannot define it with respect to any other number. Is that clear? समझ में आया? सेंट का मतलब 100 होता है. That's why we always are supposed to define it with respect to 100 only. I hope that's clear. अभी समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज को 100 के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफाइन करते हैं. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस. अगर मैं इसका नाम बदल के ऐसा कुछ रख दूंगा, अब आप किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे इसको? इट्स पर 10 age. He'll be defining it with respect to 10. ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता है. I'm just giving you an example. So we need to understand why it is always with respect to 100, because percentage and cent means 100. So you have to define it with respect to 100. You cannot define it with respect to any other number. Going ahead. Again, random question again. Can you just recall percentage को हिंदी में क्या बोला जाता है? Anyone? Generally, the language is so weak कि आप लोग reply नहीं कर पाते. I guess it is something like प्रतिशत.
अगर किसी ने सुन रखा हो, इसका बाइफर्केशन कीजिए। प्रति मीन्स पर, ईच, शत मीन्स सेंट, क्योंकि सेंचुरी को हिंदी में शतक बोला जाता है, अगर आपको याद हो तो शतक का रूट वर्ड है शत, शत मीन्स सेंट, सो इट इज प्रतिशत, परसेंट। इतना लॉजिकली डिफाइंड है मैथ्स की, हिंदी में भी उसके मीनिंग, वर्ड का मीनिंग होता है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी आर जस्ट अनअवेयर ऑफ इट। ये दो चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गोइंग ahead, it's percent. The third word is off. Off means, now generally students are able to answer this question, but let's take it out. There is a rule that we studied in the basics, BODMAS, BODMAS. How many of you can recall the full form of the word BODMAS? Quite a difficult one. Again, going ahead, it's bracket, off, divide, multiply, add and subtract. So off जो है वो वहां से आ रहा है, जिसका मतलब होता है multiply, BODMAS से आ रहा है. Is means equal to and unknown. Achha, whenever it's a question based on mathematics and a value it's not given to you in the question, you generally assume it to be x. So please take a note of the things. ये 5 वर्ड है जो आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, आगे वाली कैलकुलेशन इस पे बेस्ड है. And whatever we have covered so far, I hope that's clear to you. We can go ahead with it. I hope you must have taken a note. So going ahead with it, just give me a second for this. Yes. Now the important thing. What I'll be doing is I'll be giving you 3 questions right now. And trust me, these are the easiest of the questions we can have from percentage. They are nowhere defining the difficulty level of exam. My motive is to check upon 2 things. One, it's concept clarity. The other, it's calculation speed. So request from my side, please do not use calculator and try to solve the questions as soon as possible, at the earliest possible. Just as the questions are visible on the screen, you can pause the video for 2 minutes, can solve the question and can come back. We can have the answers after that. So here are the questions on the screen. Question number 1, 2, 3. बहुत basic से question है. जल्दी से कीजिए. Pause the video and we'll continue with it. Okay. So I believe all of you must have solved the questions for now. I'll just give you the answer and hopefully answers सबके सही होंगे. First is 70%, the second is 540, the third is 156. And I hope कि आप सबके answers सही हैं. But in case अगर किसी का answer गलत है, तो there are certain things that we need to understand. First thing, इन सबको छोड़ो, अपन तो बेसिक पे चलते हैं. What do you feel about maths? Yeah, maths का questions generally you are able to solve or you get stuck in between. और आंसर इसके साथ सॉल्व हो जाते हैं, right? But rarely you'll find students who get stuck in between. Maths questions solve नहीं होते. And talking about this question, the biggest mistake that you might have committed is आपने शायद प्लस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया होगा. That is the only mistake you might have committed. ठीक है? So considering that mistake, we need to understand कि होता कैसे है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज अपन ने कहीं ना कहीं छोटी सी चीज रट रखी है, छोटा कौन बड़ा इंटू 100 विल गिव मी परसेंटेज. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट थ्रू आउट बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन एग्जाम. अपने को समझना जरूरी है. whenever we are talking in terms of percentage, we are talking about two. Whenever we are talking in terms of maths, basically quant, any question based on it will be a 2-step procedure to solve. Step 1, framing the equation. Step 2, solving the equation. Now, what according to it's more difficult? Is it framing the equation or solving the equation? I guess it's framing the equation. So we'll start with the framing of equation. My equation framing आपको समझाता हूँ, solve आप खुद कीजिएगा. We don't need to hurry through the question. We don't need to be rush up. We just need to focus on the words that I'm underlining. I've underlined what. What means the quantity it's known or unknown. Unknown. Generally, what is used for something that is not known to you. I'm writing x because it's an unknown. Underlining per. Per means divide. अभी मैंने बताया था. Cent means 100. अभी मैंने बताया था. Off means multiply. अभी मैंने बताया था. 180. Is means equal to. अभी मैंने बताया था. And 126. Equation framing इतना easy होता है. कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. Just need to write down the words step by step. Word को पकड़ो, step को लिखो. So it is what percent of 180 is 126. What percent of 180 is 126. So solve this equation, you will easily get the answer for this. रटने वाली नीड खत्म. Going ahead, it is 80% of
a number which is unknown, x, is 432. You'll solve this, you'll get the answer. It is 65% of 240 is. You'll solve this, you'll get the answer easily. So I hope ये equation framing आपको समझ में आ गया होगा. You just need to use the words that we have just discussed in the previous slide. जो मैंने आपको 5 वर्ड्स बताया, आपको केवल वो डिस्कस करने का है, वो अंडरस्टैंड करने का है. ट्रस्ट मी फॉर दिस, ये इक्वेशन आप बहुत इजीली फ्रेम कर पाएंगे. वंस यू आर एबल टू फ्रेम द इक्वेशंस इजीली, सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं, वो तो अपने को आता है यार. प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को आता है. So nothing to worry about in terms of calculation. It is more about framing of equation. We have just discussed it and I hope the things are clear to you now. Going ahead. Next, we will talk about conversion. Conversion किसका? बेसिक सी चीज है, फ्रैक्शंस का परसेंटेज, परसेंटेज का फ्रैक्शन. अब देखिए, ये भी कहीं ना कहीं आपका याद किया हुआ होता है, रटा हुआ होता है. इंटू 100 कर दो, डिवाइड 100 कर दो, ये सब मेरे को नहीं करना है, मुझे समझना है. जैसे अटकूंगा, एक रैंडम वैल्यू अपने हिसाब से अज्यूम कर लूंगा. आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 80%. So I'll write it to be 80 per means divide and cent means 100. So what you have done, you have converted a percentage into fraction. अभी आपने देखी, ये percentage को आपने fraction में convert कर दिया. कैसे? 100 से divide करके. Simply what you did, you divided by 100. To convert percentage into fraction, you need to divide by 100. And getting the fraction back to percentage, need to multiply by 100. A very basic concept, ये आप लोगों को आता होगा पहले से. Nothing to discuss in detail for, right? I hope that's clear. Can take a note and then we'll go on. I hope you must have taken a note for this. Let's go ahead. Now we'll talk about this conversion of fraction to percentage, percentage to fraction in a detailed manner, starting with fraction into percentage. So when we are talking in terms of conversion of fraction into percentage, we just need to recall the basics. अपने को याद होगा. 1 by 1, 100%. 1 by 2, 50%. 1 by 3, 33.33. 1 by 4, 25. 1 by 5, 20%. यहां तक जनरली याद होता है. आगे चलते हैं. 1 by 6, 16.66. 1 by 7, 14.28. 1 by 8, 12.50. 1 by 9, 11.11. 1 by 10, 10%. 1 by 11, 09.09. 1 by 12, 8.33. 1 by 13, 7.69. 1 by 14, 7.14%. 1 by 15, 6.66%. 1 by 16, 6.25%. 1 by 17, 5.88%. 1 by 18, 5.55%, 1 by 19, 5.26%, and 1 by 20, it's 5%. ये एक बेसिक सा टेबल है जो आपको अभी याद करना है. You have to pause the video, you have to learn the table right now. पहले इसको याद करेंगे, फिर आगे चलेंगे. Now, the first question is कि याद क्यों करना है? मतलब, is it like that in case if I'm not learning this table, I won't be able to survive without it? Yes, you can easily. But we are talking about competition exams. यहाँ पे टाइम मैटर्स अ लॉट, कैलकुलेशन स्पीड मैटर्स अ लॉट. सो ये चीजें वो हैं जो आपको कैलकुलेशन को हेल्प करने में सपोर्ट करेगी. दूसरी बात, अच्छा ऐसा है तो फिर सब कुछ ही याद करके चल जाऊंगा ना. So I'll just give an example for this. If I'll ask you to learn all the squares up to 100, like 1 से 100 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर याद करके आना है आपको कल तक, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई होप द आंसर इट्स नो. नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है सर. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इजी कर देता हूँ. 1 से 10 तक के स्क्वायर याद करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऑब्वियसली यस. हाँ, आराम से हो जाएंगे. नेक्स्ट डे 11 to 20 करना है, हो जाएंगे. 100% हो जाएंगे. नेक्स्ट डे 21 to 30 करना है, अब हो जाएंगे. हाँ, अभी भी हो जाएंगे. सो इफ आई विल बी ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर वैल्यूज ऑफ 10 per day, I'll easily be able to manage the things. मैं कर लूंगा. Now the second practical reality is, by the time you are learning 81 to 90, don't you feel like you might have forgotten the values 31 to 40 का स्क्वायर? पुरानी वैल्यूज भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज अपने पास एक दिमाग है. वी हैव अ ब्रेन. इस ब्रेन का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है. सो व्हाट यू डू, यू कीप ऑन स्टोरिंग द डेटा इनटू द ब्रेन. एज सून एज द ब्रेन इज फुल एंड यू एंटर सम न्यू डेटा, वो पुराना डेटा इरेज कर देता है. यू कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग इन योर ब्रेन. सब कुछ याद करके नहीं रख सकते हैं. तो फिर एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी. कैन आई टेक द वैल्यू कि 1 से 20 तक के स्क्वायर आप प्रैक्टिकली याद कर सकते हैं? यस. दूसरी बात मैं बोलता हूं, आपको 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है. वुड यू लाइक टू लर्न दिस वैल्यू और वुड यू लाइक टू हैव अ शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस?
Simple answer. It's a short trick because I cannot learn a value like 97 square. Justified. In case if I'll ask you to calculate 7 square, would you like to learn this value or have a short? Obviously. Sir, याद है ये तो मेरे को 49 होता है. So basic सा difference is that कि जो basic values अगर अपने को याद रहती है तो short trick जितना time भी अपना waste नहीं हो रहा है. We are just directly getting the answer. Second reason, when we are talking about calculation of a square like 97 square, even the short trick will require the value of 3 square. तो जब तक छोटी वैल्यूज याद नहीं होंगी बड़ी वैल्यूज का कैलकुलेशन मैं कर ही नहीं सकता हूँ. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वो बेसिक वैल्यूज हैं जो मुझे याद करनी पड़ेगी. सो ये जो बेसिक वैल्यूज 1 by 1 से 1 by 20 तक मैंने लिखी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो फॉर इट, नो ऑल्टरनेट अवेलेबल टू इट. ये याद कर दोगे तो आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ठीक है, अब इसको भी याद कैसे करना है वो बताया था, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे जस्ट स्टार्ट मगिंग अप द थिंग्स, याद रटने बैठ जाते हैं जल्दी जल्दी. मुझे वो सब नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल करने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा, होपफुली विल थिंग्स विल वर्क आउट. मेरे हिसाब से 1 by 1 आपको याद है, 1 by 2 याद है, 1 by 3 भी याद होगा, 1 by 4, 1 by 5. आई एम बिलीविंग कि आपको 1 by 5 तक का वैल्यूज याद होगा. आगे चलते हैं. अगर आपको 1 by 6 कैलकुलेट करना है तो अब आप क्या करेंगे? जस्ट टेल मी वन थिंग, कैन यू राइट 1 by 6 इक्वल टू 1 by 3 into 1 by 2? ऐसा लिख सकता हूं मैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है? यस. 1 by 3 कितना होता है? 33.33. अगर मैं 1 by 3 का हाफ कर दूंगा, आई विल गेट 1 by 6. यस. सो 33.33 का आधा कर दीजिए, यू विल गेट 16.66, व्हिच इज द करेक्ट आंसर फॉर 1 by 6. सिंपल सी बात है, समझ में आया कि 1 by 6 को निकालना है, 1 by 3 का हाफ कर दीजिए. 1 by 3 अपने को ऑलरेडी याद था. In this way, we can calculate the percentage value for all the fractions of composite numbers like 6, 8 and so on, so on, so on. Problem आएगा प्राइम के साथ. 6 के लिए तो 3 था, 7 के लिए तो कोई भी नहीं है पहले. अब क्या करूं? सो उसको समझने की कोशिश करते हैं. प्राइम को आपको याद ही करना पड़ेगा, बट मैं एक तरीका बता देता हूँ, होपफुली विल वर्क आउट. फॉर 7, 7 into 2 14, 14 into 2 28. अब इजीली याद हो जाएगा. 7 का डबल 14, 14 का डबल 28. डायरेक्टली विल गेट द आंसर. आई होप दैट्स क्लियर. Yes. Going ahead. 1 by 8 will be half of 1 by 4. 25 का आधा 12.50. 1 by 9. Relate it with 11. Look at 1 by 9. You are writing 11.11. Yani you are writing 11 twice. Look at 1 by 9, 11. It's 09.09. मतलब आप क्या कर रहे हो? 11 में 9 लिख रहे हो और 9 में 11 लिख रहे हो. You are just swapping the values. I hope that's a way of learning the values. It's clear to you. 1 by 10 is half of 1 by 5. 20% का आधा होता है 10%. 1 by 11 we are already done with. 1 by 12 is half of 1 by 6. 16.66. Half is 8.33. 1 by 13. It's a prime number. You have to learn this value. 1 by 14. It's half of 1 by 7. 14.28. Half is 7.14. 1 by 15. Although it's a composite number, but it's easy to learn. अगर आप learn करने की इच्छा रखते हैं तो आप इसको बहुत easily याद कर सकते हैं. देखिए 15 is 1 and 5. So if we'll add 1 plus 5, you'll get 6. It's a 6 on repeat. Directly आप याद कर सकते हैं. 1 by 16, it's half of 1 by 8. 12.5 का आधा होता है 6.25. 1 by 17, it's a prime number. Have to learn this value. 1 by 18 is half of 1 by 9. 11 का half होता है 5.5. So it's a 11 on repeat. It should be 5.5 on repeat. 1 by 19, it's a prime number. Have to learn this value. 1 by 20 is half of 1 by 10. That is 5%. I hope now the values are easier to learn. Hopefully you can learn it. There's one more thing that we can look into the picture. एक बार देखते हैं जल्दी से. 1 by 5 का value 20%. 1 by 20 का वैल्यू 5%. डोंट यू फील लाइक द वैल्यूज आर इंटरचेंजेबल? जैसे ही 20 डिनोमिनेटर में आता है 5% के साथ चल जाते हैं. अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट. 1 by 4 25%. तो 1 by 25 4%. सिंपल. 1 by 14.28. दैट्स कॉम्प्लिकेटेड. 7%. 7 का फ्रैक्शन देखेंगे, you'll get an idea about it. ठीक है. सो अभी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज द वैल्यू राइट नाउ, पॉज द वीडियो राइट नाउ. यू हैव टू टेक अ 10 मिनट्स का हॉल्ट इन बिटवीन. 10 मिनट का टाइम दीजिए. लर्न ऑल द वैल्यूज राइट नाउ. And trust me, they are going to help you out a lot in the coming calculations. Going ahead, please pause the video, take a 10-minute halt, and then go ahead. Chalo. I hope you must be done with it. Going ahead. Abhi tak we were talking about the conversion of fractions into percentage. Now we'll talk about the conversion of multiple of fractions. Like the first value, it's 2 by 17. अब मैं बोलता हूँ 2 by 17 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए. बहुत सिंपल सोल्यूशन. सर 2 by 17 into 100.
200 by 17. I'll divide. I'll get the answer. That's a perfect answer. Trust me for this. एकदम सही बता रहे हो आप लोग. The only issue is कि ये बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे. इसको इजी करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा. So let's try to figure it out. What you're saying, 2 into 100 by 17, 200 by 17 is a perfect answer. It's a correct answer, but the calculation involved is way too much. So let's try to reduce it. 2 by 17. Can I write 2 by 17 as 2 into 1 by 17? And 1 by 17 का वैल्यू तो आपको याद था पिछली फ्रैक्शन टेबल से 5.88. 2 into 5.88, 11.76. Don't you feel like now the calculation is going to be much easier as compared to 200 divided by 17? Right? Chalo. Let's take another example. 3 by 19. Tell me. Perfect. 3 into 1 by 19. And 1 by 19 is 5.26. We'll multiply. I'll get the answer. 4 by 15. 4 into 1 by 15. Simple. So 1 by 15, 6.66. Yeah, you'll get the answer. 12 by 13. 12 into 7.69. Now, just wait for a second. You seriously feel like 12 into 7.69 it's going to be an easy calculation? I don't think so. Look, what happens is कि अपन 2 into 100 by 17, 200 by 17 को गलत नहीं बोल रहे थे, अपन उसको lengthy और calculative बोल रहे थे. Again, we are saying 12 into 7.69, according to me, it's going to be lengthy and calculative. तो जब ऐसा केस आ जाए तो इसके में alternate क्या होता है वो अपन देखते हैं. Writing this 12 by 13 into a different form may help you out. मैं इसको लिख रहा हूँ 13 by 13 minus 1 by 13. Any problem? No. 13 by 13 cut ke 1, which is 100%, minus as it is, and 1 by 13 is 7.69. You subtract, you'll get the answer easily. I hope now this makes sense and it's making the calculations easier. Going ahead, 15 by 16. Perfect. It will be 16 by 16 minus 1 by 16. 100 minus 6.25%, 93.75% is the correct answer. 17 by 19. Okay, so it's going to be 19 by 19 minus 2 by 19. 100% minus 1 by 19, 5.26 था तो उसका डबल कर दूं 10.52 and I'll subtract, I'll get 89.48% as the correct answer. So these are two different cases. The first case is close to 0. When you can just observe the numerator, it's a smaller value, it's close to 0. You can directly multiply and can get the answer easily. Second case, it's close to full value. When the numerator, it's a larger value, it's close to denominator, you can subtract and can get the answer in an easier manner. The important thing to be observed is कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप क्लोज टू फुल वैल्यू वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे देन you'll get a wrong answer. आंसर आपका तब भी सही आएगा. The only complication is कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. In case if you want to avoid it, you can by using the method that I've just told you. चलो फाइन. So I hope यहाँ तक क्लियर है. अभी क्या करना है, you have to pause the video again. आपको प्रैक्टिस शीट मिला हुआ है. प्रैक्टिस शीट का मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. प्रैक्टिस शीट 1 क्वेश्चन नंबर 31 to 40 आपको अभी सॉल्व करना है राइट नाउ. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 31 to 40, चेक आउट द आंसर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द शीट, कंप्लीट देम, देन वी विल फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक. So I hope you must have completed the questions, question number 31 to 40. Going ahead, abhi tak we were talking about the conversion of fraction into percentage. Now we talk about the conversion of percentage into fraction, right? So percentage into fraction की बात करते हैं. Percentage को fraction में कैसे convert कर सकते हैं? We just need to look into it. एक बात बताइए, जैसे मैं आपको वैल्यू देता हूँ 66.66% and you need to convert it into a fraction. कैसे करेंगे? Simply it is going to be 66.66 upon 100. सर बहुत से बेसिक्स है. Yes, 100% correct. But the issue is, what do you feel about the calculation or cancellation of 66.66 upon 100? Is it easy enough? No. So अब इसको इजी करने का तरीका है क्या? फ्रैक्शन टेबल जो अपन ने याद कर रखी है. प्लीज अगर आपके पास कहीं पे नोट किया हुआ है तो इस फ्रैक्शन टेबल को एज ऑफ नाउ एक बार आप अपने सामने ओपन कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन इजी लगे. आपको करना कैसे वो मैं समझाता हूँ. तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. पहली बात, 66.66 है मतलब डेसिमल है. तो जो फ्रैक्शन टेबल में इंटीग्रल वैल्यू है जैसे 1/2 इज 50%, यू डोंट नीड टू चेक दिस वैल्यू बिकॉज इसमें डेसिमल ही नहीं है. केवल डेसिमल वैल्यूज चेक करने. दूसरी बात, कभी भी रैंडम वैल्यूज में एंट्री नहीं लेने का.
हमेशा स्टार्टेड फ्रॉम 1 by 1 एंड सो ऑन सो ऑन सो। तीसरी बात, जिस वैल्यू पे आपको जाके लगे कि डायरेक्टली या मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट 66.66, वहां पे टेक अ हॉल्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 by 1 चेक नहीं करना है, 100% था। 1 by 2 डेसिमल नहीं था, चेक नहीं करना है। 1 by 3 33.33, कैन वी गेट 66.66? Yes, we just need to multiply it by 2. So I could have written this 66.66% as 2 into 33.33, and 2 into 33.33 को मैं लिख सकता हूं 2 into 1/3, और 2 into 1/3 को मैं लिख सकता हूं 2/3. So I hope that's clear. Let's try the next one. Okay. So it's going to be 42.84. जल्दी से देख के बताइए, take your time. If you'll go around the fraction table in a proper manner, you'll figure it out कि 1/7 यानी 14.28 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे you are getting the value. So it should be 3/7. Right? Third, 37.50. Again use the table. It will be 12.50. That is 1/8 into 3. 3/8 will be the correct answer. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 43.33. ट्राई, अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है नो इश्यूज एट ऑल। आपको करना क्या है, एक बार ट्राई कीजिए। अभी तक के तीनों क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आए पुराने वाले, तो नथिंग टू वरी अबाउट। बस एक बार इसको ट्राई कीजिए एंड देन विल डिस्कस द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव ट्राइड, एंड हो सकता है आपका आंसर आया, हो सकता है मेजरली इसका आंसर नहीं आता। तो अपन करेंगे कैसे वो समझिए। इसको सब कुछ छोड़िए, आप तो मैं बेसिक कैलकुलेशन पे चलता हूँ। मैं बोलता हूँ 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए, कैन यू डू दैट? यस, इट्स 40/100। कैंसिलेशन इजी है डिफिकल्ट है? इजी है। 40.75%, now 40.75/100, cancellation easy or difficult? Now it is difficult. So we need to understand cancellation difficult कब बन रहा है? When we are getting a decimal in the value. So basically the problem is decimal, because उसकी वजह से cancellation tough हो रहा है। तो अपने को अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करने का है। 0.66 getting into the fraction table 1/1 fraction decimal नहीं है, 2 में decimal नहीं है, 1/3 0.33 था। Can I get 0.66 from 0.33? Yes, I multiplied by 2, I got the answer 0.84। 33 से 84 ला सकता हूँ मल्टीप्लाई करके? नो। 1/4 में 1/5 में डेसिमल नहीं है, I'll go for 1/6, 16.66। 0.66 से 84 ला सकता हूँ? आई गेस नो। 0.28 से 84 ला सकता हूँ? यस, इंटू 3 कर दो, आई गॉट माई आंसर 0.50। देखिए 1/8 12.50, आई गॉट माई आंसर 0.33। सबसे पहले कहां मिल रहा है? 1/3 33.33। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन 33.33। आपको 43.33 चाहिए था, आपको 33.33% मिल गया। आपका डेसिमल का इश्यू सॉर्टेड है क्या? यस। 43 चाहिए था, 33 मिल गया, और क्या करूं? सब प्लस 10% कर दो। दिस इज 1/3। अच्छा, 10% का आपको याद है 1/10? यस, टेक द एलसीएम, गेट द आंसर, सिंपल सी बात। सो इट इज 33.33 प्लस 10%, 1/3 प्लस 1/10। आई टेक द एलसीएम, आई गेट द आंसर 13/30। 48.56, 0.56 कहां से ला सकते हैं? पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट, गेट बैक टू द वीडियो, विल डिस्कस। I hope you must have paused and you must have got the answer for this. 0.56 आएगा 0.28 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे। So it should be 2 into 14.28, that is 28.56, और भी 20 ऐड करना पड़ेगा to get 48.56. That's going to be 2/7 plus 1/5, 17/35 is the correct answer. Going ahead, 56.66. 0.66 कहां से ला सकते हैं? Multiple ways. It can be 6.66, one of the ways. It can be 33.33 का 0.33 से 0.66 can be the other way. ठीक है, सो जहां से भी आप ट्राई कीजिए, ट्राई टू गेट द आंसर। मेरा आंसर आएगा 6.66 प्लस 50%, दैट इज 1/15 प्लस 1/2, 17/30। आप इसको अलग अलग तरीके से ला सकते हैं, you'll get the same answer in every case, trust me for this. ठीक है, सो आई होप ये जो परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन है ये आपको क्लियर है। If you are done with it, for the practice purpose, go back to the sheet. I'm telling you, sheet 1 का क्वेश्चन नंबर आपको करना है 21 to 30। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कंप्लीट एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। यहां तक हो चुका है। फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट,
in between the topic that we have discussed so far. You can go back and discuss it again. Rest you can ask to me in the doubt session. Second thing, अभी 21 to 30 आप लोग कर चुके हैं, 31 to 40 ऑलरेडी कर चुके हैं. अब शीट 1 में बचा 1 to 20. 1 to 10 अगर आप देखेंगे तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है. आई होप यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो सॉल्व देम. अब बचता है 11 to 20. तो जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ 11 to 20. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है 600 is what percent of 3600. Pause the video, take a halt and decide कि ये करना कैसे. ठीक है, just a halt for 2 seconds, 2 minutes. Okay, fine. So hopefully you must have got the answer. Let me just tell you the actual way of solving the question. 600 is what percent of 3600. If you'll solve this, अभी ये सबसे बड़ा मिस्टेक अपन यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल करते हैं. ये मत कीजिए, अपन तो आगे चलते हैं. 600 अपॉन में 3600 इनटू में 100. मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस देन 10 सेकंड्स विदाउट यूजिंग पेन पेपर. इस 100 को यूज ही मत करो, इसको काम में नहीं लेने का है. You just left with 600 upon 3600. Cancelling the zeros, I'll have 1 by 6. If you remember 1 by 6 का वैल्यू आपने अभी याद किया था 16.66. You have got the answer. That's it. आपको केवल 600 upon 3600 का फ्रैक्शन निकालना होता है. Directly you will get the answer. Please try to apply the same on question number 11. I hope you must have got the answer. It's 50%, less than 10 seconds. Without pen paper, you are getting the answer. So for question number 11 to 20, this is the approach that you have to apply. Hopefully, you'll be getting the answers in a quicker manner. So this was all about the first session of percentage. A quick recap of everything that we have discussed. We talked about unitary method. We talked about percentage. We talked about the words related to percentage, the meaning of percentage, how to convert fraction into percentage and vice versa. Even their multiples are to be considered of, right? This is all that we have covered. As a part of homework, you have to complete sheet 1, question number 1 to 40. Second thing that I want you to complete positively by the next session is to learn the entire fraction table positively by the next class. Third, if possible, try to learn squares up to 20 and cubes up to 10. With this, we are done with the first session, winding up the session for today. We'll be continuing with the topic and we'll be discussing the formulas related to percentage in the coming session. Thank you.